to sitting by the window. I admire the nature and rethink of my decisions because sometimes they might go wrong. So I never thought I'll be making this video, but here I am. So अगर आप लोग मुझे नहीं पहचानते हो, my name is Divyanshu and I love making documentary style videos. So after the last video I put on YouTube, which was I think a month or not back, बहुत कुछ हो गया. I went back to my house for summer breaks. वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा enjoy करा है. I went to swimming classes. मैंने एक 7 days का क्रैश कोर्स लिया है स्विमिंग का, क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल नहीं आता था. एंड देन आफ्टर दैट कोर्स नाउ आई कैन स्विम बेटर देन बिगिनर, बट आई स्टिल नीड टू प्रैक्टिस. बट काफ़ी मज़ा आया स्विमिंग सीखने में. 7 days का कोर्स था. मैंने एक आर्मी कोर्स लिया था जिसमें आर्मी जैसी ट्रेनिंग थी, तो काफ़ी मज़ा आया. बहुत सारे बाइक राइड्स करें और दोस्तों के साथ घूमना वगैरह सब किया मैंने. फिर इसी बीच मैंने मेरा लास्ट ब्लॉग उसका पार्ट 2 वो भी एडिट करा, विच वॉज लाइक माई लास्ट डे ऑफ फर्स्ट ईयर. सो वो एडिट कर रहा था. देन सैड थिंग हैपेंड, दैट वीडियो गॉट करप्टेड. अब लाइफ है, होता है. दैट आई थॉट and I thought maybe something is better. फिर मैंने उसे बुला लिया. Then life went on. फिर ट्रिप घर का ट्रिप ख़त्म होने से पहले I went to पूरी जगन्नाथ धाम for रथ यात्रा. It was one of my favorite festival. So वहाँ पे I went with my family and then there I shot a lot of videos. मैंने अच्छे से प्लान करके हर एक शॉट को बहुत ही अच्छे से शूट किया, because I was putting on a documentary style. So as you know, मैंने story telling style में एकदम से वीडियो बनाया. Then what happened was like very sad, and that was a turning point in my life.
not a turning point, but yeah, it put me into a thought. So कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए क्या है, क्योंकि what happened was मैंने वो वीडियो शूट कर लिया, फिर मैं वापस आ गया अपने हॉस्टल में, और थोड़े दिनों बाद मैंने जब वीडियो एडिटिंग करना स्टार्ट किया तो कुछ ही दिनों में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वो वीडियो भी करप्ट हो गया. देन आई गॉट इनटू अ थॉट कि एक्चुअली शुड आई डू वीडियो एडिटिंग एंड वीडियो पोस्टिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज आई थॉट लाइक अगर कोई चीज़ 2 बार हो रही है इसका मतलब या तो ये कोई सिग्नल है या फिर समथिंग लाइक दैट. बट देन आफ्टर अ लॉट ऑफ थॉट आई थॉट लाइक आई शुड डू इट. प्रॉब्लम्स तो आती हैं बट आई नीड टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम. एंड तो मैंने सोचा कि हार्डवर्क करता है. आई मीन अगर 2 वीडियोज़ अगर करप्ट हो गई इसका मतलब ये थोड़ी की ख़त्म हो गया सब कुछ. तो फिर मैंने सोचा कि आई मीन लाइफ है, होता रहता है. सो नाउ आई थिंक तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए ताकि मैं YouTube पे बता सकूँ कि एक्चुअली क्यों मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, वरना काफ़ी अच्छे शॉट्स आते हैं. बट अबाउट द पूरी थिंग आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, और शायद से वो वीडियो वापस आ जाए तो मैं वो वीडियो डाल दूँ अगर वापस आया तो. ओके, तो मुझे भी एक मैसेज आ रहा है कि कल CT है, ऑब्वियसली रिमाइंडर जो मैंने डाला था. बट डोंट वरी, इट्स B.Tech, और B.Tech में कोई पढ़ के CT नहीं देता, क्लास टेस्ट. ओके यार, क्लास टेस्ट, CT का मतलब क्लास टेस्ट होता है. तो रिसेंटली ना एक बाइक शो हुआ था, तो वो बाइक शो मैंने शूट किया था. आई मीन बैटरी बहुत कम थी क्योंकि क्लासेस के जस्ट बाद में गया था. बट मैंने ट्राई किया था कि मोस्ट ऑफ जितना भी पार्ट शूट किया जा सके शूट कर लूँ. और हुआ ये कि जैसे ही बाइक शो स्टार्ट होने वाला था थोड़े ही टाइम बाद मेरा बैटरी डाउन हो गया. पर मैंने कुछ शॉट्स लिए, तो आप वो देख लो एक बार. और शॉट्स काफ़ी अच्छे आए, क्रेजी आए. ओके, तो मैं चला पढ़ाई करने CT के लिए. तब तक आप देखते रहो मेरा वीडियो. Sitting there, hands going through your hair, with eyes closed, you recall the divide and then the fall. Into your heart, into your soul, mine fell apart. Your dreams are void, you're paranoid. Want to restart? Staring down at your feet, that old bench you're trusting seat. Wanting for things to change. Life became wicked and strange. Into your heart.
and the next it's TP1, this building, and next to it is TP2 where our classes happen. This building has escalators and everything. I'll show you guys if I can. It's totally vacant right now because it's a holiday. So it's a Sunday, so I came by just to sit down over here because it's a very peaceful area. Because like on Sundays, field mostly खाली रहता है क्योंकि सब Sunday है तो chill will कर रहे होते हैं. But mostly on Saturdays and Sundays I just don't go anywhere outside. I'll be in the campus and roam around. So I found this spot. It's a very good one. आज फील्ड में भी कोई नहीं है, मतलब बहुत ही कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है. So last Thursday it rained quite heavily. So उसका effect अभी तक दिख रहा है, अपने फील्ड में दिख रहा है अभी. And then I just came here to talk about my videography journey, about content creation journey. So from starting I was already fascinated by the style of making movies. वो मूवी में that main character vibe जो heroes को मिलता है. So I was already about that कि मुझे भी ऐसा कुछ चाहिए, क्योंकि talking about that I was a very introvert kind of guy. I'm still an introvert kind of guy. So so I always wanted that main character vibe. So I thought making content creation and making videos will act as a bridge, will help me connect the people around using YouTube and other platforms, and it did well. It did lessen my fear of talking to people. बहुत पहले जो है मैं बहुत डरता तो नहीं था, but there was a fear inside me that stopped me from talking to people around, interacting with them, connecting with them. But slowly I used videography as a medium to start connecting with people, and now I'm improving, and now it's improving. Yeah, not that much, but still I'm good at it. बस यही है यार, मतलब वीडियोग्राफी जो है बहुत ही वीडियोग्राफी एक पैशन है मेरे लिए. सो आई डू इट जस्ट फॉर माई हैप्पीनेस. अब पोस्टिंग it's just like कि I want to get over my fear of talking to people, connecting to the world, showing what I love. So that's it. Right now it's pretty humid out there because yesterday it rained as well, and now the sun is not out. The temperature is okay, but it's quite humid. You can see I'm sweating as well. But yeah, the feel is good. Campus vibes on Sundays are good because it's basically empty, so I love it. Sitting alone is what I have always learned of, because the kind of society I was living in, means the place from birth I was living in. So there's no one of the same age around me, around my place. So I was already addicted to the thought of sitting alone and doing my stuff and spending time alone. So I can't get over it very quickly, obviously. So I still can't go with people, and I still end up sitting in places like these, sitting alone and doing my stuff. Documenting my life was always what I had dreamt of from childhood, and now doing it as a passion and enjoying the process can't get any better.